Welcome back, my dear students of grade 8th. The chapter Resources. In this chapter, we have studied the resources and the types of resources. In this video, we will continue our topic, that is types of resources. In last video, we have discussed about two types of resources, that is on the basis of development, on the basis of origin. Today we will discuss the next type of resources, that is on the basis of ownership and on the basis of uses. Let us start today's work. On the basis of the ownership, we have the four types of resources: private, community, national and the international resources. Private resources, these resources owned by a private individual or their families, for example land, trees. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक आदमी या किसी फैमिली के पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हाउस इज द व्हीकल्स owned by a individual. Second is community resources, resources which are used by many members of a society or with people living in the neighborhood, such as community centers, village wells, society parks, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेग्राउंड एट्सेट्रा. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक कम्युनिटी के लोग यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके विलेज में कोई वेल है या कोई पार्क है, दैट इज़ यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट विलेज, तो दैट इज़ नोन एज कम्युनिटी रिसोर्सेज. नेशनल रिसोर्स, they are owned by the local, state or national government, for example forest, mines, rivers, canals etc. नेशनल रिसोर्स मीन्स जो नेशनल बाउंड्री, किसी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी रिसोर्स मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज अ नेशनल रिसोर्सेज, क्योंकि वो उस कंट्री के सभी लोग उनको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द इंटरनेशनल रिसोर्सेज. These resources are owned by international agencies or organizations like United Nations, the panel of scientists, policymakers, government heads, socio-economic personalities from both the developed and the developing country manage the development, distribution and maintenance of international resources. ये resources वो रिसोर्सेज होते हैं जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज होती है उनके अंडर होते हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन, और इसे कोई भी कंट्री यूज़ कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल डीप ओशन एरिया विच आर 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ एनी कंट्री. लेट अस मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ मैप. The resources that is within the political boundary line of any country that are known as national resources. This is the political boundary line of India. तो इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे, फॉरेस्ट, मिनरल्स, रिवर्स etc., that is owned by India, and the in ocean political boundary line up to 370 किलोमीटर तक जो भी ओशन के अंदर मिलेगा, that is also related to India, that is a part of national resources. and beyond this boundary line, इस लाइन से आगे जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं, that is known as the international resources. On the basis of use and utility, that is the next type of resources. On the basis of use and utility, resources are widely grouped into certain categories. Notable among these groups are, इसमें हमने बहुत सारी कैटेगरीज हैं, पर जो मेन है that is agriculture resources. They include many agriculture crops like cereals, pulses, oil seeds, beside agriculture inputs like फर्टिलाइज़र, लेबर etc. तो इसमें हमें जो भी एग्रीकल्चर से मिलता है वो सभी इसमें शामिल है, दैट इज़ नोन एज एग्रीकल्चर रिसोर्सेज. मिनरल रिसोर्सेज मीन्स जो भी रिसोर्सेज हमें मिनरल से मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज मिनरल रिसोर्सेज. दे आर ड्राइड फ्रॉम द ओर्स above or below the earth's surface crust, subdivided into categories like fossil fuel, metallic and non-metallic minerals. जो भी हमें अर्थ के ऊपर या अर्थ के नीचे जो भी मिनरल्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सम रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर.
These are known as agriculture resources. The resources that we get from the minerals, that is known as mineral resources. For example, petroleum, gold, silver, different types of stones, etc. Water resources. These include both fresh water resources flowing on the land, in the river, lakes, springs, underground water and marine resources under the ocean and the sea. इसमें हम फ्रेश वाटर को शामिल करते हैं जो जहाँ पर भी है, मीन्स रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स, अंडरग्राउंड वाटर, मेराइन सोर्सेज, सभी कुछ इसमें शामिल हो जाता है. मेराइन सोर्सेज मीन जो ओशन और सी में हमें जो भी मिलता है, दैट इज़ नोन एज वाटर रिसोर्सेज. Both of these have a variety of uses like drinking, irrigation, cleaning, production of salt, etc. फ्रेश वाटर है या फिर ओशन और सी का सॉल्टी वाटर है, दोनों को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट. These are the examples of the water resources: river, ponds, lakes, streams, oceans, and we can use that resources for various purpose. As a human make the dam on the rivers to make the electricity, that is the water resources, and we use the water for drinking, irrigation, cleaning, etc. And ocean water is also used for different purpose, and we get the different type of resources from the ocean and the sea. These resources known as the marine resources, whatever we get under the ocean or the sea, these are known as the marine resources. And we also use the ocean water for making the salt. That's all for today's lecture. I hope today's lecture is clear to you. In the next video, we will discuss the sustainable development and how we can conserve the resources. Thank you for watching this video. Have a nice day.